So diagonalize, okay, diagonalize the matrix. Diagonalize the matrix, that is A is equal to 2 1 2 1. This is the matrix. Okay, 2 1 2 1. So first step क्या है? We have to find the eigen. Then we have to find eigenvectors. Okay, got it? Then we have to form the X matrix. Then find X inverse. Then form and find the D matrix. These are the 5 steps are there. So first we find the eigenvalues. So eigenvalues क्या होगा? First we have to find eigenvalues. Okay, so eigenvalues find करो. तो eigenvalues find करोगे तो first the characteristic equation क्या होगा? The characteristic equation is A minus lambda determinant equal to 0. So that implies this is 2 minus lambda 1, 2 1 minus lambda. This determinant equal to 0. Okay, that implies this is 2 minus lambda into 1 minus lambda minus 2 is equal to 0. So again that implies this is lambda square minus 3 lambda plus 2 minus 2 is equal to 0. Got it? And again we can say this lambda square minus 3 lambda is equal to 0. So that implies your lambda is equal to 0 and 3. Now it is correct? Lambda is equal to 0 and 3. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. So now we have to find the eigenvector. We have to find the eigenvector. So let us find the eigenvector. तो यहाँ पे देखो, okay, eigenvector. तो eigenvector find करोगे तो for lambda is equal to 0 find करो. For lambda is equal to 0. Okay, this homogeneous equation A minus lambda I into x is equal to 0. Okay, so that implies so lambda is equal to 0. So same 2 1 2 1 into x1 x2 is equal to 0 and 0. So that implies you'll get 2x1 plus x2 is equal to 0 because दोनों equation same. Yes or no? 2x1 plus x2 is equal to 0. दोनों equation same है इसलिए मैं एक equation लिखा. So from this equation what you get? This x2 is equal to minus 2x1. If x2 is equal to minus 2x1, then what is your eigenvector? I can write x1 is equal to, that is x1 comma x2, which is equal to, this is x1 and this is minus 2x1. So now if you take x1 common, then this is 1 and minus 2. So your 1 and minus 2. This is your eigenvector. Okay, this is your eigenvector. The first eigenvector, 1 and minus 2. So let us come to find the second eigenvector for lambda is equal to 3. Okay, for lambda is equal to 3, the homogeneous equation A minus lambda I, this x is equal to 0. So now if you put lambda is equal to 3, then this is minus 1 plus 1, again 2 minus 2. This into x1 x2, okay, is equal to 0 0. So now if you find the equation, what you get? This is minus x1 plus x2 is equal to 0, or you can say this is 2x1 minus 2x2 is equal to 0. And both the equations are same. Both the equations are same. So we can say this x1 is equal to x2. From the both the equation, one condition we will get, that is x1 is equal to x2. And if x1 is equal to x2, then what is your eigenvector? Second eigenvector is x1 x2.
and both are same. So you write this is x1 and this is x1. Okay, now you're taking x1 common, this is 1 and 1. Okay, and the second eigenvector is 1 and 1. Got it? तो थर्ड स्टेप क्या है? आइगन वैल्यू हो गया, आइगन वेक्टर हो गया. थर्ड स्टेप इज यू हैव टू फॉर्म द एक्स मैट्रिक्स. फॉर्म, ओके, फॉर्म द एक्स मैट्रिक्स. Okay, form the X matrix, model matrix. So that is your X matrix is equal to, that is x1, x2. So which is equal to, your x1 is what? 1 and minus 2, you see. Your x1 is 1 and minus 2. So you write the first one, this is 1 and minus 2. And second one is 1 and 1. So this is a 2 cross 2 matrix. Okay, this is your X matrix, that is the model matrix. It is called model matrix. Okay, this is called model matrix. This x is equal to, this is 1 minus 1 1 and minus 2 1. So next step क्या है? You have to find x inverse. तो x inverse क्या होगा? The x inverse will be what? The determinant क्या? 1 plus 2, that is 3. So 1 by 3 determinant. Okay, so this will be 1 1 minus 1 2. It is correct. It is correct. Yes, sir. Okay, this is the x inverse. Okay, x inverse. Okay, 1 by 3, 1 minus 1, 2 1. Okay, so this will be, you can say this is 1 by 3. Okay, you write like this, no problem. So who's right? Inverse. 2 cross 2 matrix is still direct click there. Okay, but if it is 3 cross 3, then you have to find the x inverse. But in the problem, okay, in the 3 cross 3 matrix, so you have to find the x inverse in your choice. Okay, जो method apply करके x inverse find कर सकते हैं. Okay, so now after finding x inverse, so you have to find the diagonal matrix D. Okay, you have to find the diagonal matrix. Okay, diagonal matrix. This D is equal to x inverse A into x. So x inverse is 1 by 3, 1 minus 1 to 1. And your A matrix is 2 1 to 1. And your x matrix is how much? 1 1 minus 2 1. Okay, so this is the matrix x inverse A into x. So now if you multiply this matrix, okay, if you multiply this matrix, so क्या आएगा? तो if you multiply, तो पहले multiply करो. Okay, तो पहले ये दोनों को multiply करो. 1 by 3, 1 minus 1 2 1, इसको रखो. ये दोनों को multiply करो. ये दोनों को multiply करने से क्या होगा? 2 minus 2 0. Okay, then 2 plus 1 3. Then this will be 0. This will be 3. तो अगेन मल्टीप्लाई करो ये दोनों को. तो दिस इज 1 by 3. So this will be 0. Okay, then this will be 0. Then this will be 0. And this will be 9. Okay, so now 1 by 3 multiply करोगे तो this will be 0 0 0 3. So you will get this matrix. Understood or not? So now this is your diagonal matrix. You see, this is your diagonal matrix. This is the diagonal element, and this 0 and 3. These two are diagonal element. These two are eigenvalues. Okay, but we got the eigenvalues 0 and 3. So here 0 and 3. But यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो. देखो तुम्हारा जो आइगन वैल्यू आया है, ओके, आइगन वैल्यू आया है. देखो, for eigenvalues, if your eigenvalues, okay, are
lambda 1, lambda 2, lambda 3, and eigenvectors. Eigenvectors are x1, x2, x3. This is the corresponding eigenvalue. Lambda 1 का x1, lambda 2 का x2, lambda 3 का x3. Okay. Now, when you form the X matrix, if you write X matrix is equal to x1, x2, x3, okay, if you find the X matrix is equal to x1, x2, x3, then the diagonal matrix जो आएगा, that is X inverse A into X, this will be what? This will be lambda 1, lambda 2, lambda 3. This diagonal element आएगा. Now, if you change the order, suppose you take your X matrix is equal to suppose x2, x3, x1. हो सकता है because somebody take lambda 1, lambda 2, lambda 3 eigenvalue और somebody take lambda 2, lambda 1, lambda 3 चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और तुम जब सॉल्व करोगे, इक्वेशन फाइंड करो, रूट फाइंड करोगे, तो आगे पीछे भी हो सकता है, कोई 03 लिखेगा, कोई 30 भी लिखेगा, नो प्रॉब्लम. ओके, उसी हिसाब से आइगन फाइंड होगा. Okay, so if you change the order, okay, the eigenvector, so x2, x3, x1, whatever you change, okay, तो तुम्हारा जो D matrix आएगा, that is the x inverse ax, okay, तो this will be what? तुम्हारा x2 जो eigenvector जो फर्स्ट eigenvector होगा, x2 eigenvector जो पहले लिखे हो, उसका corresponding eigenvalue तुम्हारा क्या होगा? lambda 2 होगा. x3 का lambda 3 होगा and x1 का lambda 1 होगा. तो तुम्हारा जो डायगोनल मैट्रिक्स आएगा, इट फॉलो दिस ऑर्डर. ओके, तो जब मॉडल मैट्रिक्स करोगे, तो मॉडल मैट्रिक्स में जिस ऑर्डर में तुम आइगन वेक्टर लोगे, उसी हिसाब से तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट जो आएगा डायगोनल मैट्रिक्स में, उसी ऑर्डर में आएगा, उसी ऑर्डर में आएगा. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, तो ये वाला याद रखो. तो जो डायगोनल मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स आया है, वो देखो 0 और 3 डायगोनल मैट्रिक्स आया. ठीक है. So now let us solve a 3 plus 3 matrix. Okay. So let us see another example. We take a 3 cross 3 matrix and we have to diagonalize it. Okay, diagonalize the matrix. Okay, so let us 1 minute. Okay. Okay, so you write one matrix. Okay, your A matrix is equal to, this is 1 6 1 1 2 0 and 0 0 3 0 0 3. Okay, suppose this is your matrix. So you have to diagonalize it. So first you have to find the eigenvalues. So you find eigenvalues. So eigenvalues, the characteristic equation is what? This is A minus lambda I, determinant equal to 0. So now this is 1 minus lambda 6 1 1 2 minus lambda 0 and 0 0 3 minus lambda. This determinant equal to 0. So now, so that implies if you multiply, okay, find the determinant. So what you get?
So you will get this is 1 minus lambda, okay, into 2 minus lambda into 3 minus lambda, okay, minus 0, okay, minus 6 into, okay, minus 6 into, this is 3 minus lambda, okay, minus 0, okay, and then plus 1 into, this is 0 minus 0, okay, which is equal to 0. So let us solve it. So what you get, this is 1 minus lambda, 2 minus lambda, 3 minus lambda, okay, minus, this is 6 into 3 minus lambda is equal to 0. So if we take 3 minus lambda common, so it will be 1 minus lambda, 2 minus lambda, minus 6 is equal to 0. So which implies, so you will get this is 3 minus lambda, तो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1 होने से हो जाएगा, यस इट विल हैपन. ओके, तो दिस इज 3 माइनस लैम्बडा, ये हो जाएगा लैम्बडा माइनस 4 lambda minus 4 lambda plus 1 is equal to 0. Now it is correct. Lambda minus 4 and lambda plus 1. Is it correct? So now that implies we can write this lambda is equal to, this is minus 1, 3 and a 4. Minus 1, 3 and a 4. So these are the eigenvalues. Okay. So now you find the corresponding eigenvectors. Now you find the corresponding eigenvectors. So now you find the eigenvectors. Okay. So now for lambda is equal to minus 1, for lambda is equal to minus 1, the homogeneous equation a minus lambda I x is equal to 0. So that implies, okay, so that implies, so what you get? So if you put lambda is equal to minus 1, so this will be 2, 6, 1, this is 1, 3, 0, and this will be 0, 0, ये हो जाएगा 4. This into x1, x2, ओके. अच्छा एक काम करो, उसको डायरेक्ट ये करो सब, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू. तो एक काम करो, उसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा स्टेप कम करने के लिए. तो ये इसको तुम एक काम करो, उसको पहले सिंप्लीफाई कर दो. This a minus lambda I, okay, a minus lambda I, okay, is equal to this, and which can be reduced to what? This is 2, 6, 1, okay. तो यहाँ पे reduce क्या होगा, उसको 2r2 माइनस r1 करोगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ओके. 2r2 माइनस r1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1, ओके. तो ये 0, 0, 4, तो ये मैट्रिक्स आएगा. इज इट करेक्ट? तो यहाँ पे तो ये R2 इज इक्वल टू 2R2 माइनस R1 है. हाँ, R2 इज इक्वल टू. अच्छा तुम एक काम कर सकते हो, तुम R2 के जो R2 रो 2 के साइड में लिखोगे तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2R2 माइनस 1, दैट मींस ये रो 2 को रिप्लेस हो रहा है. ठीक है, ओके. तो रो 2 के साइड में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर. हाँ, तो और तो नहीं होगा.
ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ तुम्हारा इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन तुम्हारा हो जाएगा 2x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 minus x3 is equal to 0 and 4x3 is equal to 0. So from these two equations you will get your x3 is equal to 0. Okay, if x3 is equal to 0, so from equation 1 we get, okay, from equation 1 we get this 2x1 plus 6x2 is equal to 0. So that implies we will get this x1 is equal to minus 2x3. Is it correct? Sorry, 2x2. Is it correct? So now your x1 is equal to, your x1 is equal to, this is x1, x2, सर x3. ये Okay. हाँ सर एक्स बोलो. वन इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स टू होगा. Yes, sorry, 3x2, yeah, 2 by 6 by 2, 3, yeah, you're right, 3x2, yeah, minus 3x2. So which is equal to, your x1 is equal to minus 3x2 and x2 as it is, and your x3 is equal to 0. So if you find, this is what, minus 3, 1, 0. This is your eigenvector, minus 3, 1, 0. Is it correct? So now we come to the second one. So lambda is equal to 3. For lambda is equal to 3. For lambda is equal to 3, what is your a minus lambda I? Okay, the homogeneous system, this is equal to 0. And where a minus lambda I matrix is equal to, तुम लिखो 3 पुट करोगे तो this is minus 2, 6, 1, this is 1, minus 1, okay, 0, and this will be 0, 0, 0. This, okay, तो ये तो तुम्हारा डायरेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, ये डायरेक्ट हो जाएगा. तो डायरेक्ट लिख सकते हो. ओके, तो ये हो जाएगा. और भी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो. ठीक है. तो यहाँ पे तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, और कुछ करने का जरूरत नहीं. तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा माइनस 2x1 प्लस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0 और x1 minus x2 is equal to 0. So from second equation you will get x1 is equal to x2. Okay, x1 is equal to x2, and from the first equation, so you will get, this is minus 2x1, okay, plus 6x1, because x2 is equal to x1, plus x3 is equal to 0. Okay, so that implies your x3 is equal to, this is 4 minus 6 minus 2, 4x1, so this is minus 4x1. Is it correct? So now your second eigenvector x2 is equal to, okay, x2 is equal to, this is x1, x2, x3, okay, and your x1 is equal to x1 रहेगा, your x2 is equal to x1, and x3 is equal to minus of 4x1, and which is what, this is 1, 1, minus 4. So this is the second eigenvector, 1, 1, minus 4. Then you come to the last one, lambda is equal to 4. So a minus this homogeneous equation, this a minus lambda I x is equal to 0. So this a minus lambda I is equal to, तो तुम 4 पुट करोगे लैम्बडा की जगह, तो ये हो जाएगा माइनस 3, 6, 1, 1, minus 2, 0, then 0, 0, minus 1. तो ये आ जाएगा. ठीक है. तो उसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, ये 1 minus 2 है, तो पूरा
रो जीरो हो जाएगा, उसको तुम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो। तो दिस इज -3 6 1, तो ये हो जाएगा 0 0। ओके, तो ये हो जाएगा -3, तो 0 0 -1, and your operation is what? Your operation is, this is your R2, 2R2 plus R3, sorry, 2R2 plus R1, this R2, okay, 2R2 plus, oh sorry, 3R2, 3R2 plus R1, तो 3R2 प्लस R1 होने से ये 0 हो जाएगा, प्लस R1 होने से ये सॉरी ये 1 होगा, सॉरी -3 नहीं है 1 होगा, सॉरी दिस विल बी 1, इज इट करेक्ट? So now from this equation you can write this is -3x1 plus 6x2 plus x3 is equal to 0. Okay, and your x3 is equal to 0. Okay, and -3 x is equal to, both are same, x is equal to 0. If x is equal to 0, then from first equation you will get -3x1 plus 6x2 is equal to 0. Okay, so 6x2 is equal to 0, so that implies your x1 is equal to 2x2, your x1 is equal to 2x2. We will get the third eigenvector, that is x1 x2 x3, and which is equal to, your x1 is equal to 2x2 and x2 and x3 is equal to 0. So you will get, this is 2 1 0, 2 1 0. So all the eigenvectors, okay, we able to find. So now you form the X matrix. Your X matrix is equal to what? The first eigenvector is -3 1 0. Second eigenvector is 1 1 -4, and third eigenvector is 2 1 0. So this matrix is your model matrix. This is your X matrix. So now if you want to find the X inverse find कर सकते हो, find X inverse. तो X inverse कैसे find करोगे? You can apply गॉस जॉर्डन मेथड. ओके, तुम गॉस जॉर्डन मेथड में तुम X inverse find कर सकते हो. yes or no? तुम गॉस जॉर्डन में X inverse find करोगे तो क्या रहेगा? This is ओके, फाइंड X inverse. तो X inverse find करोगे तो पहले तुम लिखना पड़ेगा, ओके, augmented matrix 0 1 0 0 0 1. ओके, एंड उसको तुम सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करो, क्या होगा? करो. दिस R2 is replaced by 3R2 plus R1, एंड यहाँ पे होगा 0 तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -3 1 2, दिस इज 1 0 0, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, ये 3 + 1 4, ये 3 + 2 5, ये 0 + 1 1, this is 3, this will be 0, and third row will be -4 0 0 0 1. Okay, then again you keep second row unchanged. Okay, keep second row unchanged, and the row 1 is replaced by 4 row 1 minus row 2, and row 3 is replaced. This is row 3 plus row 2. So that 4 - 4 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा? सेकेंड रो सेम रहेगा 0 4 5, दिस इज 1 3 0. फर्स्ट रो चेंज क्या होगा? R1 पे 4 R1, तो -12 - 0.
ये हो जाएगा 0 और ये क्या होगा, दिस इज 8 माइनस 5, दिस इज 3, दिस इज 4 माइनस 1, दिस इज 3, this is 0 minus 3 minus 3, this will be 0 minus 0, this will be 0, and r3 क्या होगा, r3 plus r2, this is 0, this will be 0, this is 5, this is 1, this is 3, this is 1. Okay, this matrix here. Again you change this r1, r3 fix रहेगा, r1 को change करोगे, this r1 is replaced by, this is 5 r1 minus 3 r2, and this r2 is replaced by, this is r2 minus r. So what you get, so this will be minus 12, sorry, ये हो जाएगा 5 r1 minus 3r3, this is minus 60, this will be 0 and this will be 0, ये तुम्हारा 0 आएगा, मतलब r2 का वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, चेंज कर देता हूँ, दिस इज 15 minus 3, 15 minus 3, this will be 12, ये हो जाएगा minus 15 minus 3 minus 18 and ये हो जाएगा 0 minus 3, this is minus 3. Second, this is 0 4, this will be 0. Okay, uh, then ये हो जाएगा 1 minus 1, this will be 0, 3 minus 3, this will be 0, 0 minus 1. Then your row 3 will be fixed, this is 0 0 5 1 3. एक्सक्यूज मी सर, Yes. सर 12 फिर -24 होना चाहिए ना? कहाँ 12 की जगह 24, नहीं 12 सर, की 12 के बाद जगह 24, -18 जहाँ लिखा है, अच्छा वहाँ पे फाइव क्या होगा, इंटू थ्री 24 होगा, माइनस, हाँ सर, अच्छा अच्छा यहाँ पे जो, अच्छा यहाँ पे ये यहाँ पे, हाँ सर, -18 के जगह -24 हाँ होना चाहिए ना? अच्छा 1 मिनट, तो ये था 5 r1, 5 r1 मतलब दिस इज -15 हाँ -9, yes yes, -15 -9, you're right, हाँ -15 -9, -15 -9 -24, yeah you're right. बाकी सब ठीक है, तो देखो और बार चेक करो, बाकी सब ठीक है, यस सर। ओके ओके, तो ना एंड यहाँ पे क्या करोगे, इस स्टेप में तुम r1 को replaced by r1 into -1/60, r2 is replaced by, this is r2 into 1/4 and r3 is replaced by, this is r3 into 1/5. ओके, तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0, तो यह 0 0 1, ओके सर, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा 12/-60, तो -1/5 -24/60, ये हो जाएगा 6 में काटना 4/10 2/, ओके, एंड -3/-60, ये हो जाएगा 1/20, देन r2 में 1/4 है, तो ये 0 0 -1/4 एंड ये हो जाएगा 1/5, 3/5 और ये हो जाएगा 1/5, दिस इज करेक्ट. तो नाउ your x inverse is equal to, this is -1/5, 2/5, 1/20, this is 0 0 -1/4, okay,
and this is 1 by 5, 3 by 5, and 1 by 5. ये 1 by 20 आएगा तो -3/60, ये -3 आएगा। ठीक है, okay, so this is your x inverse, it is correct, okay. So now let us see, so what is your D matrix? Your D matrix is equal to x inverse A into x, and your x inverse is what? This is -1 by 5, 2 by 5, 1 by 20, okay. Then this is 0, 0, -1 by 4, this is 1 by 5, 3 by 5, 1 by 5. This matrix, and your A matrix is what? Your A matrix is 1, 6, 1, 1, 6, 1, okay, 1, 2, 0, 1, 2, 0, okay, then 0, 0, 3, 0, 0, 3, this matrix, and X matrix is what? Your X matrix is -3, 1, 2, -3, 1, 2, then 1, 1, 1, sorry, क्या था X matrix? -3, 1, 2, 1, 1, 1, 0, -4, 0. Okay, 1, 1, 1, 0, -4, 0. ये मैट्रिक्स था, ये सर नो, तो उसको Yes. मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा आएगा, तुम्हारा -1, 0, 0 आएगा, 0, 3, 0 आएगा, और 0, 0, 4 आएगा। Okay, the diagonal element contains the eigenvalues -1, 3, 4. Okay, -1, 3, 4. If you multiply this matrix, you will get this. Okay, what my point? Okay, and suppose question again come, that find a to the power 8. Suppose find a to the power 8. तो a to the power 8 कैसे फाइंड करोगे? इसे फाइंड a to the power फाइंड करोगे, तो a to the power 8 फाइंड करोगे तो क्या होगा? तुम्हारा a to the power 8, a to the power 8 इज इक्वल टू तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा डी मैट्रिक्स क्या था? x इनवर्स a इंटू एक्स था, तो d to the power 8 क्या होगा? दिस इज x इनवर्स a to the power 8 into x. Understood or not? Okay, तो तुम्हारा a8 क्या होगा? योर a8 इज इक्वल टू x इनवर्स है, तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा, ये x इनवर्स हो जाएगा। ओके, तो दिस इज योर a8. तो नाउ दिस व्हिच इज इक्वल टू तुम्हारा x मैट्रिक्स है, ओके, तुम्हारा x मैट्रिक्स है, इट इज गिवन, तो x मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है? Okay, what is your x matrix? So which is equal to your x matrix is what? -3, 1, 2, 1, 1, 1, 0, -4, 0. This is your x matrix. And d8, तो d8 क्या होगा? -1 to the power 8, 0, 0, 0, 3 to the power 8, 0, and 0, 0, 4 to the power 8. This is the d matrix, the power 8. Okay, and again x inverse is what? And x inverse you can write, this is 1 by 5. Okay, तो ये यहाँ पे जो x इनवर्स का मैट्रिक्स है, तो तुम x इनवर्स मैट्रिक्स को एक काम करो 1/20 कॉमन ले जाओ, तो सो दैट इंटीजर आ जाएगा, तो तुमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में इजी होगा। तो दिस इज 1/20 मल्टी कॉमन ले जाओगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा -481, -481, ओके, 0, 0, -5, 0, 0, -5, एंड ये हो जाएगा 4, 12, 4, 12, 4। ओके, तो दिस मैट्रिक्स यू विल गेट, देखो 1/20 कॉमन लेने से वही आएगा ना, देखो -4, 8, 1,
तो यहाँ पे आ जाएगा -5 सेकंड रो में, थर्ड रो में आ जाएगा 4 12, ओके 4, ओके यू विल गेट दिस मैट्रिक्स एंड यू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जो आएगा लिखोगे। ओके तो डायगोनल मैट्रिक्स का पावर 8 जो है वो इजीली फाइंड कर पाओगे, -10 टू द पावर 1 हो जाएगा, 3 टू द पावर 8 4 टू द पावर 8 कैलकुलेट करो मल्टीप्लाई करोगे। ओके तो ये वाला जो डायगोनलाइजेशन का यूज ओके तुम करोगे जब तुम मैट्रिक्स का पावर फाइंड करोगे। तो सपोज मैट्रिक्स का पावर तुम बहुत ज्यादा फाइंड करोगे, सपोज ए टू द पावर 100, ए टू द पावर 200, ओके इसके जब हाई पावर फाइंड करोगे, ओके so that you follow this method so that the calculation will be easy. You cannot do by hand, pen and paper, okay, but when you do the programming, okay, we help some programming, okay, for doing this, then you follow this method because इसमें calculation कम होगा। और तुम ऐसे a to the power 8 फाइंड करोगे तो बार बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इट विल बी व्हाट वेरी लार्ज कैलकुलेशंस, ओके इट विल टेक मोर टाइम्स, ओके अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Okay, so this is all about your diagonalizable, okay. Okay, so you write some problems you should solve, okay, the diagonalizable, because your diagonalizable is very important, okay. So you write some matrix, okay, uh, okay, write some matrix, so you diagonalize it, okay. Diagonalize it, okay. So another thing is what is the condition of a diagonalization, okay. ये वाला matrix पहले लिखो, suppose matrix लिखो A is equal to write 5335, 5335, this matrix, and another matrix you write that is 113 113, 151 151, and 311 311, this matrix, okay. तो ये दोनों का और एक मैट्रिक्स लिखो, और एक मैट्रिक्स लिखो that is 8 minus 6 2, 8 minus 6 2, minus 6 7 minus 4, and 2 minus 4 3, okay. These three matrices you note it, okay. तो उसका डायगोनलाइज करोगे, लिखे हो क्वेश्चन? Yes, sir. Okay, so next you see what is the condition of a diagonalizable, okay. Condition of diagonalizable, that means a matrix is diagonalizable or not, कैसे पता चलेगा diagonalizable or not? The first is if all the eigenvalues, if all the eigenvalues are distinct, okay, if all the eigenvalues are distinct, then it is diagonalizable, then it is diagonalizable, ठीक है। तुम्हारा सब मैट्रिक्स तुम्हारा क्या हो डिस्टिंक्ट होगा तो ये ऑब्वियसली डायगोनलाइजेबल होगा। सेकंड पॉइंट इज if the eigenvalues, okay, if eigenvalues repeats, okay, if eigenvalues repeats, okay, eigenvalues repeat means what? Suppose you can say, okay, say this lambda is equal to lambda 1 lambda 1, two times it repeats, lambda is equal to lambda 1 lambda 1, two times it repeats, okay. That's my point. Suppose lambda equal lambda 1 lambda 1, two times it repeats, then it is diagonalizable, it is diagonalizable, it is diagonalizable provided
provided there exist two eigenvector, there exists two eigenvector, two eigenvector for lambda is equal to lambda 1. अगर lambda 1 टू टाइम्स रिपीट हुआ है तो दो आइगन वेक्टर मिलना चाहिए, दो आइगन वेक्टर मिलना चाहिए, अदरवाइज ये डायगोनल नहीं होगा. दैट मींस फॉर दैट इज वी कैन से if algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity for each lambda, for each lambda. Okay, if algebraic multiplicity is equal to geometric multiplicity होगा, then we can say this is diagonal algebra. Understood my point? तो diagonal का condition क्या है? The सर वो diagonal का आइगन condition is, वेक्टर्स है ना? हाँ, ओके, द आइगन वैल्यूज देखो क्या होता है. तुम्हारा सपोज है 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स में तुम्हारा आइगन वैल्यूज 3 आएगा, तो 3 डिस्टिंक्ट आएगा, तो तुम्हारा 3 आइगन वेक्टर मिल जाएगा. ओके, बट उसमें कुछ आइगन वैल्यू रिपीट हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा, नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज लेस हो जाएगा और डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लेस हो जाएगा. बट यू हैव टू फाइंड एन नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स. तो एन नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स होने से तुम एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स फॉर्म कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे. तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंडीशन लिखा हूँ, जो सेकंड वाला जो कंडीशन है, योर एम शुड इक्वल टू जीएन. तो algebraic multiplicity and geometric multiplicity same होगा. If lambda repeat two times, then for that lambda you will get two. If lambda repeat three times, then for that lambda you will get three vectors. Then the number of eigenvectors is same as the order of the matrix. Got my point? Okay, this is Yes. the condition for diagonal algebra. Got it? Time Okay. over. I stop here. Okay. You write your roll number in the chat box and I leave.